very clear by making the people of the state know where we exactly stand as far as the corporation loans are concerned, sir. Sir, but again, sir, I want to bring to your kind notice, sir. Sir, whatever you said, I'm not disputing with that, nor your figures are wrong, sir. But I always keep saying one thing, sir, is that whenever a question is raised, the answer is being given by the respective departments. They should give a proper reply, sir. Sir, now, I would like to, bring to the notice of LAQ number 477 in the Telangana Legislative Assembly, session 4, sir. Sir, the question was of Harish Rao Saab, Rajeshwar Reddy Saab, Prashant Reddy Saab, Vivekanand Saab, and Sanjay Saab and Mari Rashekar Reddy, sir. So the question was very clear. The guarantees given to government and non-government sectors from 7 December 23 till now, the quantum of amount drawn as far the details therefore, sir. And then also the question says the quantum of FRBM loan and non-FRBM loan procured by the state government from 2023 till now, sir. So the quantum of non-FRBM loans also was asked, the amount of loan taken by public sector undertaking without the government guarantee, sir. So ab ye iska answer when we see, sir, the answer to A says that 30 November, guarantees given is 51,277. Amount drawn 51,000. As on 30th November 24, the FRBM loan drawn 23, 24, 50. Sir, यहाँ पे जब हम answer देख रहे हैं, sir, if we have to calculate the 52,000 and 61,000, it comes to 114 plus 10,000, it comes to 1,24,000, sir. So ये जो आप जो amounts बोल रहे हैं और ये answers जो दे रहे हैं ना साहब, ये भी जो है सर सही नहीं आता है. तो that's why मेरा आपसे request है. अब आप ये देखिए पीछे 30th November 2024 non-FRBM loans 51,277, and then 30th November for answer to the D 10,099, sir, as above. So I just want to say that, sir, कि जब भी एक आंसर देते हैं तो उसको सही अगर देंगे तो बहुत अच्छा होगा, सर. सो आपने जो सारी बातें कही, सर, बहुत सही कहा, बहुत आपने साफ रख दिया पूरा पिक्चर को, जिसके लिए मैं आप ना सिर्फ मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा बल्कि कहूंगा कि दिस वाज ड्यू फॉर द पीपल टू हैव द क्लियर पिक्चर. मगर एक चीज भूल गए साहब आप. वैसे तो आप सारी चीजें बोले, एक मशहूर फिल्म स्टार के बारे में भी हकीकत बोल देना था साहब. क्या हकीकत थी, सर? एक गलत बात ये फैलाई जा रही है कि गवर्नमेंट ने, अगर मैं गलत हूं तो आप क्लैरिफाई कर दीजिए, सर. ये सब्जेक्ट से हटकर है, लेकिन मैं बोल रहा हूं, मैं नाम लेना नहीं चाहता वो मशहूर फिल्म स्टार का, क्योंकि मैं अहमियत देना नहीं चाहता. लेकिन सर, मेरे इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो फिल्म स्टार गए थिएटर को पिक्चर देखने के लिए, बैठे हुए थे, गड़बड़ हुई, उसके बाद पुलिस वाले आकर बोले कि भगदड़ हो गई, स्टैम्पेड हो गया, 2 बच्चे गिर गए हैं, एक लेडी मर गई है. तो उसके बाद में वो फिल्म स्टार पलट के ऐसा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं अब तो पिक्चर हिट होने वाली है. और जो लोग बोल रहे हैं कि वेव कर लेते गए, सर, 1-2 बच्चे स्टैम्पेड में आ गए, एक औरत मर गई, उसके बाद भी वहीं पर बैठकर पूरा पिक्चर देखकर उठकर जाते वक्त भी वो स्टैम्पेड को नहीं देखे, वो फिर गाड़ी में बैठ के ऐसा वेव कर लेते हुए गए. क्या मैं सही हूं या गलत हूं, सर, आप बोलिए? क्योंकि एक मैसेज ऐसा दे रहे हैं कि गवर्नमेंट जुल्म कर रही है, ज्यादती कर रही है. सर, इंसानियत कहां है बताइए? Sir, I also go for public meetings, sir, where thousands of people come. I make sure that there is no stampede, sir. I make sure that the security around me doesn't push the people so that, nobody comes under the stampede, sir. I went for the Maharashtra election, thousands and lakhs of people were there, sir. And I made sure that nobody is pushed. Sir, I remember, sir, once my security official, by protecting me, his cap had fallen down. He had to do his duty, he was protecting me. So I went and I picked up his cap, sir. But here you see, sir, one lady dies, 2 small children are on the stampede, one is under coma, and
That gentleman doesn't even bother to go and ask and see, sir, at that moment, and goes waving like that. If I am wrong, sir, please correct me, sir. If I am wrong, please correct me, sir. This is what is happening, sir. Mukhyamantri.